अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इन क्वेश्चंस के अलावा जो कि मैं वीडियोस बना के लगा रहा हूँ, अगर आपको कोई और भी किसी और एक्सरसाइज से कोई और चैप्टर से कोई क्वेश्चन आपने समझना है, पूछना है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि प्रायोरिटी पे आपके जो बताए हुए क्वेश्चंस हैं वो उसकी वीडियो बना के मैं अपलोड करूँ। क्वेश्चंस एंड वी सॉल्व द these questions which are question 15. A part is 1/3 into 2q minus 3 into q minus 4 is equal to 6. First we solve these equations in a standard equation, quadratic standard equation. For that we multiply both sides by 3. It is 3 multiplied by 1 and 1/3, and other value is q minus 3 q minus 4 is equal to 3 multiplied by 6. We multiply by 3 because of we remove the fraction of 1/3, cancel each other. The remaining value is q minus 3 q minus 4 is equal to 6 3s are 18. Now we multiply these two values to find a standard quadratic equation. 2q multiply q is equal to 2q square minus 2q multiplied by minus 4 is equal to minus 8q minus 3q. 3 multiplied by q is 3q minus 3 multiplied by minus 4 is equal to plus 12, and we shifted 18 on the left side. It is minus 18 is equal to 0. Now we simplify these values. We get 2q square minus 8q and minus 3q. We get 11q minus 11q, and the remaining value is plus 12 minus 18 is minus 6 is equal to 0. Now we factorize this question. 2q square multiplied by minus 6 is minus 12q square, and the middle value is minus 11. So we find the two factors, the numbers. When we multiply the factors, answer is minus 12q square, and when we add it, minus 11. The factors are minus 12q and 1q plus 1q. We get minus 12 and minus 11. It is 2q square minus 12q plus q minus 6 is equal to 0. Now take common 2q. We get q minus 6 plus 1 q minus 6 is equal to 0. And from whole value we common q minus 6 and 2q plus 1 is equal to 0. The next q minus 6 is equal to 0 or 2q plus 1 is equal to 0. In this way we find the value of q, which is q is equal to 6, and the second value of q is equal to minus 1 and q is equal to minus 1. Hence the solution set of a part of question 15 is 6 and minus 1 is the answer of the question. And the b part of question 15 is 1/4 t plus 2 2t minus 6 is equal to 1/2 t over 2 plus 1. In this question we to remove the fractions value, which is 4 and 2, and take LCM of 4 and 2. The answer is 4. So we multiply 4 both sides. Multiply by 4 both sides. We get 4 multiplied by 1/4 into t plus 2. 2t minus 6 is equal to 4 multiplied by t over 2 plus 4 multiplied by 1. Now we simplify the values. 4 cancel with 4. We have t plus 2 into 2t minus 6 is equal to 2. 2 2s are 4. It is 2t plus 4 1s are 4. Now we multiply
these two values, which is t plus 2 into 2t minus 6, to find the standard quadratic equation. It is 2t square minus 6t plus 4t minus 12. And these two values, 2t plus 4, we shifted them in the left side. We get 2t minus 4 is equal to 0. Now simplify these values. We get 2t square minus 6t plus 4t. We get minus 2t, and this minus 2t. It is minus 4t. The next is minus 12 minus 4. It is minus 16 is equal to 0. Now we take common 2 to simplify our quadratic equation. We take common 2. The remaining value is t square minus 2t minus 8 is equal to 0. And divided by 2 both sides, we get t square minus 2t minus 8 is equal to 0. Now we break or factorize the values. Minus 8 multiplied by t square is answer is 8t square. And the middle value is minus 2t. Now we require two values. When multiply, the answer is minus 8t square. And when we add them, answer is minus 2t. The values are 4t and plus 2t. Put them. T square minus 4t plus 2t minus 8 is equal to 0. Take common p. The remaining value is t minus 4. Take common 2. The value is t minus 4 is equal to 0. T minus 4, t plus 2 is equal to 0. Now we put them equal to 0. T minus 4 is equal to 0. T is equal to 4. And other values, t plus 2 is equal to 0. T is equal to minus 2. The perimeter of rectangle composite is 64 meter and its area is 207 meters. Find the length and breadth of the composite. Let we consider the two values, which is length and breadth. Let length is equal to x and breadth is equal to y. And their perimeter is 64. And the question of perimeter is 2l, say 2x, we write it 2x plus 2y is equal to 64. Take common 2. The value is x plus y is equal to 64. And x plus y is equal to 64 divided by 2 is 32. It is question 1. And their area is 207. Area means length multiplied by breadth, which is xy, which is 207. It is question 3. Now we solve this equation to find the value of x and y. From question 1, x plus y is equal to 32, and we take y is equal to 32 minus x. It is question 3. Now we put the value of y, which is 32 minus x, in question 2, which is x into 32 minus x is equal to 207. Simplify it. X multiplied by 32 is 32x minus xk is equal to 207. And convert into standard quadratic equation. We shift 32x minus x square on the right side. We get x square minus 32x plus 207 is equal to 0. Now we factorize these two values. We get plus 207 x square, and the middle value is minus 30x. And in this way we find the two values. When they multiply, the answer is 207, and when we add them, the answer is minus 30. So we take prime factor of the values 207. It is divided by 3. 3 6 are 18, 2 27, 3 9 are 27. It again 3, 3 2s are 6, and 3 3s are 9. So we find the two values. The one is minus 23, and the other is 3 3s are 9, minus 9. Minus 23 multiplied by minus 9, the answer is 207, plus 207. And when we add them, 23 plus 9
that is minus 32. We put the values to find the value of x. X square minus 32x, sorry, minus 23x minus 9x plus 207 is equal to 0. Take common x, x minus 23 minus 9, x minus 23 is equal to 0. X minus 23, x minus 9 is equal to 0. And find the value of x. X minus 23 is equal to 0, or x minus 9 is equal to 0. And the one value of x is equal to 23, and other value of x is equal to 9. Now we put the value of x, which is 23, and 9 in the question 3, and find the value of y. So y is equal to, when x is 23, y is equal to 32 minus 23. The answer is 9. And the other value is y is equal to 32 minus 9 is equal to 23. In this way, we find the two values of x, 23 and 9, 9 and 23. And in the start of the question, we consider length, the value of x, and consider y, the value of y. Mean length is greater than width. So the 23 and 9 is the answer of x and y. Instead of 9 is value of x, which is less than, and breadth is greater. So it is ignore the value, and we have length is equal to 23 and breadth is equal to 9. A rectangular field 70 meter long and 50 meter wide is surrounded by a concrete path of uniform width. Give that the area of the path is 1024 meters. Find the width of the path. So we first draw a picture, which is it is a rectangular field whose length is 70 and width is 50. And a uniform path is surrounded, a uniform concrete path is surrounded the field, which is, we write it, and its width is c. So it is x and it is x. So let's start. Length of the field is 70, width is 50. So first we find their area. The area is 70 multiplied by 50, which is 3500 meters square. It is meter. The area of field is 3500 meters, and we consider that the width of path is equal to x. So length of path is equal to, it is 70. X is increases in left side and right side. So length is 70 plus 2x. And same, the width is x and x. Width is added in its field's width, which is 50. Width of width of field with path. We add the width of the field and the path is 50 plus 2x, and area is 70 plus 2x into
50 plus 2x. The area of field with path. The area of field with path. It is 70 plus 2x into 50 plus 2x. And we know that the area of field is 3500 and area of path is 1024 is equal to, simplify the, so first we multiply these two values. 70 multiplied by 50 is equal to 3500 plus 70 multiplied by 2x is equal to 140x plus 2x multiplied by 50 is equal to 100x plus 2x multiplied by 2x is equal to 4x. Now we solve it. This 3500 cancel the other 3500 and the values we have 4x square plus 140x plus 100x. We get 240x is equal to 1024. Now we convert it, converted into standard quadratic equation, which is 4x square plus 240x minus 1024 is equal to 0. In this question, we take common 4. The remaining value is x square plus 60x minus 2 2s are 4 2s are 8, 2 24, 4 5s are 20, 2 carry 24, 4 6 are 20, 4 is equal to 0. Now we divided both sides by 4. The remaining value is x square, 60x minus 256 is equal to 0. And now we simplify or factorize the equation, which is, it is minus 256 x square and the middle value is 60x. Sorry, it is plus 60x. And now we find the two values. When we multiply them, the answer is 256, and when we add them, the answer is 60. So we first factorize 256. 256 by prime factorization to 1, 2, 8, 2, 64. So the answer is plus 64 and minus 4. When we multiply 64 by 4 with 4, the answer is minus 256. And when we add them, 64 minus 4, it is plus 60. Put the value x square plus 64x minus 4x minus 256 is equal to 0. Take common x plus 64 minus 4 x plus 64 is equal to 0. And now we take common x plus 64. The remaining value is x minus 4 is equal to 0. And find the value of x. X plus 64 is equal to 0 or x minus 4 is equal to 0. Here x is equal to minus 64 and other value of x is equal to. So it is the length of the path. And we know that length is not in negative values. So negative value of x is ignored. The value of x is equal to 4. And hence width of path is equal to 4 meter. Answer of question 17. The question 18 is the length of side and the surrounded height of a triangle are x plus 3 centimeter and 2x minus 5 centimeter respectively. Mean it is a side and it is the height. Give that the area of the triangle is 20 centimeter square. Find the value of x. So first we take side of triangle is equal to x plus 3 and height, corresponding height of triangle is equal to 2x minus 5 and area given is equal to 20 centimeters square. And we know that area of triangle
angle is equal to 1/2 base into height. The area is 20, 1/2. The base is x plus 3 and height is 2x minus 4. First we multiply 2 on the right side, it is 40 is equal to x plus 3 into 2x minus 1. So we first convert it into a standard quadratic equation, which is to multiply these two values, x multiplied by 2x, it is 2x square, x multiplied by 5 minus 5x, 3 multiplied by 2 is equal to plus 6x, plus 3 multiplied by minus 5 is minus 550 is equal to 40. Simplify it, we get 2x square plus x minus 15 minus 40 is equal to 0. And then we get 2x square plus minus 15 minus 40, it is minus 55 is equal to 2x square plus 11x minus 10x minus 55 is equal to 0. Now take common the x, remaining value is 2x plus 11, and from here we take minus 5, 2x plus 11 is equal to 0. It is 2x plus 11 into x minus 5 is equal to 0. The next 2x plus 11 is equal to 0 or x minus 5 is equal to 0. Find the value. 2x is equal to minus 11 and x is equal to minus 11. And the other value is x is equal to 5. And we know that in length, negative value is not possible. So we ignore the x is equal to minus 11. Only length is in positive value. So solution set in this question is 5 centimeter. A piece of wire is 44 centimeter long. It cut into two parts. Each part is bent to form a square. Given that the total area of the two square is 65 centimeter square, find the perimeter of each square. We know that हम जानते हैं कि piece of wire है, उसकी length 40. Length of wire is equal to 44 centimeter. अब ऐसे हमने दो कट किया, इसे दो पीसेस में, दो पार्ट्स में, और हर पार्ट को हमने बेंड किया एज ए स्क्वायर. फिर आपने और टोटल जो एरिया ऑफ दोनों स्क्वायर्स का जो एरिया होगा वो 65 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमने उनका पेरीमीटर मालूम करना है. पेरीमीटर क्या होगा कि लेंथ ऑफ ईच पीस. एंड लेट स्टार्ट. लेट length of first piece which is equal to x. और जब हम इस लेंथ को एक स्क्वायर की शक्ल में बेंड करेंगे तो फिर लेंथ ऑफ ए साइड, लेंथ ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू x ओवर 4. क्योंकि स्क्वायर हम जानते हैं कि इक्वल उसकी चारों साइड्स होती हैं, तो जब हम इसे x की जो पूरी लेंथ है उसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये उसकी एक साइड की लेंथ हो जाएगी. और इसका एरिया हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर. हम जानते हैं कि उसकी एक साइड है x ओवर 4, तो लेंथ क्या हो जाएगी, हमने दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. x ओवर 4 मल्टीप्लाई बाई x ओवर 4 विच इज इक्वल टू x ओवर 16. और इसी तरीके से हम सेकंड जो पीस है, जो लेंथ हमने मतलब जो दूसरा पार्ट है इस वायर का, हम उसे लेते हैं, कंसीडर करते हैं. लेट लेंथ ऑफ सेकंड पीस ऑफ वायर इज इक्वल टू टोटल लेंथ 44 है, उसमें से एक लेंथ अगर x है तो दूसरी क्या आ जाएगी 44 माइनस x. अब इसी तरीके से हम ये इसको जो बेंड को इस लेंथ को जो स्क्वायर की शक्ल देंगे, तो क्योंकि ये स्क्वायर है इसकी चारों साइड्स बराबर होंगी, तो फिर हम लेंगे
लेंथ ऑफ सेकेंड स्क्वायर, वो जो हमने पीस लिया सेकेंड पीस 44 माइनस एक्स, तो उसकी एक साइड क्या होगी जब हम इसे स्क्वायर की शेप में देंगे, क्योंकि स्क्वायर है इसकी चारों साइड्स बराबर हैं, तो डिवाइडेड बाई 4। और इस तरह एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज 44 माइनस एक्स ओवर 4, एक वैल्यू, और दूसरी वैल्यू भी यही सेम रहेगी, सेम साइड है क्योंकि 44 ओवर एक्स डिवाइडेड बाई 4। इस तरीके से हमारे पास दो, जो हमने एक बड़ा पीस है 44 उसको कैंसिल कट किया 2 पीसेस में, तो एक पीस का जो स्क्वायर बनेगा उसका एरिया आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 16, और जो दूसरा पीस है उसका जो एरिया आ जाएगा 44 माइनस एक्स ओवर 4 मल्टीप्लाई बाई 44 माइनस एक्स ओवर 4। फिर आगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन है कि जो टोटल एरिया ऑफ द स्क्वायर है इसका और इन दोनों, इसका दूसरे सेकंड का स्क्वायर का, इसका टोटल एरिया जो है वो 65 है, सम जो है, तो इन दोनों को हमने ऐड करते हैं, विच इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस 44 माइनस एक्स ओवर 4, और दूसरी वैल्यू है 44 माइनस एक्स ओवर 4 इज इक्वल टू 65। और सबसे पहले हम इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शिफ्ट करेंगे और फिर उसे आगे सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फॉर दैट एक्स के ओवर 16 प्लस इन दोनों वैल्यूज जो न्यूमरेटर है 44 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 44 माइनस एक्स, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 44 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाई 44, 4 4 आर 16, 1 कैरी, 4 4 आर 16 एंड 170, और इसी तरह सेकंड 4 से हम करेंगे दूसरे 4 4 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6391 1936 1936। 44 को हमने 44 से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 44 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 44x, फिर इसी तरह माइनस x को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 44x, फिर माइनस x को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x स्क्वायर, और इसका डिनोमिनेटर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 16 एंड इट इज इक्वल टू 65। अब इनको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये दोनों वैल्यूज को हम ऐड करेंगे और सेकंड वैल्यू को सिंप्लीफाई भी करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस 1936 माइनस 88x प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू 65। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर्स को हम ऐड करेंगे, ये डिनोमिनेटर अगर सेम है तो इनका एलसीएम 16 आएगा और न्यूमिनेटर एज इट इज ऊपर लिखे जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1936 माइनस 88x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 65। अब ये दोनों तरफ हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, इनको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इट इज़ 2x स्क्वायर माइनस 88x प्लस 1936 ओवर 16 इज इक्वल टू 65 ओवर 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, 1 को 2x स्क्वायर माइनस 88x प्लस 1936 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 88x प्लस 1936 इज इक्वल टू 16 को हम 65 से मल्टीप्लाई कर दें, 65 मल्टीप्लाई बाई 16, 16 5 आर 80, 8 कैरी, 16 6 आर 96 प्लस 8 इज इक्वल टू 104, सो इट इज़ 1040। अब 1040 को हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे ताकि हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे कंप्लीट कर सकें। इट इज़ 2x स्क्वायर माइनस 88 प्लस 1936 माइनस 1040 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 88x प्लस 1936 में से 1040 हम माइनस करेंगे तो 6 में से 0 माइनस किया 6, 13 में से 4 माइनस किया तो 9, 8 में से 0 माइनस किया 8 एंड 1 में से 1 माइनस किया तो ये 0, तो 896 आ जाएगा। अगर हम देखें इस क्वेश्चन में तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हम कॉमन 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 44x प्लस
इसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 4s are 8, 2 4s are 8, 1 कैरी 16, 2 8s are 16 इज इक्वल टू 0। फर्दर हम इसे डिवाइड कर देंगे 2 से पूरी इक्वेशन को, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 44x प्लस 448 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आ गया और इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर को 448 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 448 एक्स स्क्वायर आ जाएगा और मिड वाली वैल्यू माइनस 44x। अब हम दो ऐसे फैक्टर ढूंढेंगे कि जो रिप्लेस करेंगे माइनस 44x को, वो हमारे पास आ जाएंगे माइनस 28x और माइनस 16x। हम रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 28x माइनस 16x प्लस 448 इज इक्वल टू 0। यहाँ हम x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 28 माइनस 16 कॉमन लेंगे तो x माइनस 28 इज इक्वल टू 0 एंड देन x माइनस 28 x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हम x की जो वैल्यू फाइंड करेंगे x इज इक्वल टू 28 and other value is here x minus 28 is equal to 0 and x is equal to 28 and other value is x minus 16 is equal to 0 और x is equal to 16। इस तरह हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं x की, एक 28 और एक 16। अब एक लेंथ हमारे पास x है और दूसरी 44 माइनस x है। तो जो x है इसका मतलब है कि हमारे पास जो फर्स्ट पीस हमने कट किया है उसकी लेंथ या तो 28 आएगी या 16 आएगी और जो दूसरा पीस होगा और सेकंड वो आ जाएगा 44 माइनस एक्स। तो इसी तरीके से हम उसमें दोनों वैल्यूज रखेंगे बारी बारी 18 और 16। 44 माइनस 28, 44 में से 28 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा और इसी तरह दूसरी वैल्यू 44 माइनस 16, तो 44 में से 16 माइनस करेंगे तो 28 आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यू से हमें ये पता चला है कि एक वैल्यू या तो 28 होगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली 16 होगी और इसी तरीके से अगर एक वैल्यू 16 होगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली 20 आएगी। और जब हम एक पीस है उसी से हमने बेंड किया स्क्वायर बनाया तो जो साइज ऑफ पीस है वही उसका पेरीमीटर होगा। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 1 हम उसे 16 लिख देते हैं और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 2 उसे हम 28 लिख देते हैं। The figure show an ancient coin which was once used in China. The coin is in the shape of circle of radius 3 with the square of side x removed from its center as shown in the figure. ये हम देख सकते हैं यहाँ, ये कॉइन है जिसका रेडियस 3 है और उसके दरमियान में एक स्क्वायर जो है वो कट किया गया है जो कि जिसकी लेंथ x है। अब आपने मालूम करना है फाइंड द एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ द कॉइन इज 7 पाई। अब आपने बताना है कि इसका जो कॉइन का जो फेस है वो 7 पाई है। उसका जो पहली स्टेटमेंट है वो है, जो आंसर आपने देना है, द फर्स्ट इज फॉर्म एन इक्वेशन इन एक्स एंड शो दैट इट रिड्यूसेस टू 2 पाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और सेकंड आपने सॉल्व करना है क्वेश्चन 2 पाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और थर्ड में आपने पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर जो है वो भी फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर्स में जो पेरीमीटर होता है वो आपने उसे सर्कमफ्रेंस भी कह सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। radius of circle is equal to 3 centimeter and square in the circle is whose length is square in circle whose
length is x and area of square is equal to x square, because circle has the same length and same width, so its area is x square. And now we find the area of the circle. Area of circle, we know that it is pi r square, and where r is 3, it is pi into 3 square, which is equal to 9 pi. And in the question, the area of each face of the coin is 2 pi, but actually we have area of circle is 9 pi, and we reduce 9 pi from the face of the area, which is 9 pi minus 7 pi, we get 2 pi. And we know that the circle is reduced, square is reduced from the circle, so we subtract the area of square from 2 pi, which is the net area of circle is equal to 2 pi minus x square. And we write it 2 pi minus x square is equal to 0. And it is the first part is 2 pi minus x square is equal to 0. And in part second, we solve the question 2 pi minus x square, which is 2 pi minus x square. Shift x square on the right side, we get x square is equal to 2 pi. 2 pi, the value of pi is equal to 22/7. And we write it 3.142 and multiply 2 by 3.142. The answer is 6.284 is equal to x square. And we find the value of x, so we take square root both sides, and we know that square and square root cancel each other, it is x, and we take the square root of 6.284. This is the procedure we use, or we also use the calculator to find the square root of 6.284. The answer is 2.51 plus minus, and it is the value of x, and part of question 2. The third is circumference of circle. Find the perimeter of the sphere. Of sphere is x is equal to plus minus 2.51, and it is one length of the sphere, and we know that perimeter of sphere is equal to 4 times multiplied by its length. It is 4 multiplied by 2.51. It is 2 4s are 4, 2 5s are 20, 2 carry, 2 4s are 8, and 1 10. And when we simplify it, it is 10.0.